When people ask me what we do, and I always say Cooter is a comprehensive career guidance system that's used for students all across the world, students and adults. But what do we really do? We change lives. We have a motto that simply says, you cannot be what you cannot see. Our job at Cooter is to help you see what you can become. And so as an organization, our job is to help you find what your pathway in life is, help you find the right education plan, get you tuned into the right college or university, and ultimately into the right career path. That's what we do at Cooter. We have such a rich history. Cooter goes back to 1938, and here we are today. About 165 million people have used one of the Cooter career planning systems. And so those are Cooter Galaxy for our elementary students, Cooter Navigator for our secondary students, and Cooter Journey for our college students and the adult workforce across the globe. I think one of the greatest accomplishments that I personally have is that we've built a family of associates, that we have some of the best and brightest in all fields that work for the Cooter company. They're here for the right reasons. They're here to impact the lives of others. And so we hire only the best and the brightest. And when you think about what happens inside the four walls here, and it really comes back to the passion that they have for serving others. And I always say, no one can hold a candle to Cooter, because we have the highest, most reliable, valid assessments. I sleep really well at night knowing that the information we're providing for youth and adult across the globe are the best in the world. So whether it's the people that are actually writing the content that go on a highly customized system, to the technicians and the technical people that are coding behind the scenes and creating those graphics and making all the technical issues come together, and the project managers that pull it all together, and how do we do the translation so that today we can offer this in Arabic and we can offer it in Spanish and Italian and what other languages. All of that happens inside of four walls with people that are passionate about what they want to do. Kids are looking for the same thing. They're looking for hope in their lives. They're looking for success in their lives, just as parents are. We all want something more and better for our child. And so that's the great thing that I get to do as helping to bring the tools that Cooter provides, is to provide hope for the future of these youth. We serve the needs of people miles and miles and miles away. And yet I always say, when I have the opportunity to be in front of country leaders, we have something major in common. We all share the same sun and the same moon. And we share the same value about wanting better for our kids, for our community, and for ourselves. And that's really the fun part of working at Cooter, is because we're able to help people find those things in life. At the end of this small test or discussion, we will also discuss a similar kind of institute. It has been started even in India. It is quite helpful for those who are working in this field, psychology, and as well as for layman's people. India में कूडर की तरह equal to Cooter. So not exactly like that, but similar to that, equal to that institute, it has been started. वो कौन सा है? Who is the in charge of that institute and everything? So that also we will discuss. But to start with our current topic, that is Cooter Occupational Interest Survey. This is, in simple term, we can say it is an aptitude test or vocational interest test. Self-report. We have to give answers that which area it is more suitable, or we personally found it कि हाँ इसमें मुझे interest है. Accordingly, we have to give preference also. Vocational interest test, which is used for vocational guidance and counseling. If you remember, on the in a very first lecture, we discussed that having in detail knowledge of only diagnostic, it won't help you in the field. You should be able to evaluate the test, administer the test, as well as you should be able to interpret the score and should be able to communicate accordingly to concerned person. That means ability to counsel. स्कोर क्या है और उनको कैसे प्रेजेंट करना है, उनको कैसे बताना है, उसका मीनिंग कैसे बताना है. So KOI
It is a paper pencil test which consists of 100 forced choice. Unlike NEO-PI or BDI or by any other. Forced choice in the sense either yes or no, right or wrong, or any. Now, this word, it is important, triad of activities. Triad in the sense three things. तीन गोष्टी आहेत, त्या तिन्हीच्या तिन्ही तुम्हाला यूज करायच्या आहेत in the sense you have to give your preference for all the three. It is not like that you can skip any one out of three. For example, arts, commerce, science. ये तीन चीजें अगर मैंने आपको दी और मैंने आप then I will ask you to give your preference for all the three. Example, Khushi may say that, okay, science, it will be first, arts will be second, and commerce will be third. For Radhika, arts, it will be first, commerce will be second, science will be third. Like that. First choice triads, three things will be there, three occupations, three professions. It will be given to you in one section, and you are supposed to give preferences or choices. For each triad, person marks the activity preferred, as I said, most and preferred list as per his choice. To answer these 100 forced choice triads, approximately 30 minutes time limit is there, approximately. Another thing is, now see, 100 statements are there and 10 vocational interest scales are there. So in terms of clinician, now we can immediately have an idea that for each interest, there are minimum 10 statements. If we say that, yes, there is equal distribution. So outdoor interest, literacy, even mechanical, social service, clerical class, persuasive, और क्या क्या करना है उसमें, computational. So nowadays it can be more interesting for some people. ऍप वगैरे डिझाईन करायचे आहेत, ऍप डेव्हलप करायचे आहेत, किंवा काही आणखी इंटरेस्ट आहे त्यातलं. Artistic, scientific, and even musical interest. Maximum it covers. But even this, the test results are presented as percentile score. So see, again, if you remember second lecture of our session, that is a clinician, role of clinician, he must have detailed knowledge of statistics as well. सिर्फ काउंसलिंग और डायग्नोस्टिक हो गया ऐसा नहीं, तो हाउ टू इंटरप्रेट, हाउ टू कन्वर्ट रॉ स्कोर into other aspects. So percentile scores, and report lists them separately for men and women because interest may differ as per gender. Then it compares person scores on the scales to scores obtained by people holding certain professions. It is like to have the validity and reliability, and that's why CODER, it is highly weighted instrument. So आप जो कुछ आपका प्रेफरेंस दे रहे हो, so आपका प्रेफरेंस, आपका इंटरेस्ट, एंड जो उस पर्टिकुलर फील्ड में ऑलरेडी टॉप लेवल पे है, वो how far it is matching, and then accordingly another aspect is counsel to discuss vocational guidance. It will also report the match between examinee's interest and the interest reported by representative sample of students majoring in certain academic fields. So is it only interest, or is it your passion which reflects through this particular survey? ते टॅप होतं जेव्हा असं मॅचिंग होतं तेव्हा. Next part is, this is most important, interests are more crucial to job selection because interest, job selection, and job satisfaction and stress, everything they are interrelated.
The more you are interested in doing that particular job, the more you are satisfied with your job. And of course, the more you are satisfied, the less you are stressed. जॉब मिला है लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं है उसमें, जॉब मिला है लेकिन उसमें वो इंटरेस्ट नहीं है. सो काही जण असे असतात की और कुछ करने को नहीं था इसलिए ये जॉब कर रहा हूं. If you are not interested about it, if you are not passionate about your field, about your career, if you are not interested about that field, you won't be able to give your 100%. And that's why it is important that in career counseling, counselor's task is not to give or to make any kind of prediction. हाँ ये अच्छा करेगा. आपण काय तिथे with due respect to that field another, but आपण काय तिथे पत्रिका घेऊन असं भविष्य सांगायला बसलेलो नाहीये. 5 साल में इसको ये 1 लाख पर मंथ वाली सैलरी मिलेगी और ये अगले 30 साल बहुत अच्छे से जॉब करेगा. नो, but rather ultimate aim of counseling is to facilitate a decision making process which leads to an eventual vocational choice. Let them decide. ये आर्ट्स है, ये कॉमर्स है, ये साइंस है. As per your interest, as per your responses on this particular survey, it reflects that, for example, you are more inclined to arts. Now, arts means exactly what? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. All these are the things which are included in arts. These are the courses, basic courses. As a counselor, we may have some, or we should have some information about certain colleges, about their structure also, in the sense course structure, and then let them decide. हमें रेडीमेड आंसर नहीं देना है उन्हें कि हाँ तुम आर्ट्स करो, नहीं नहीं तुम साइंस मत करो, तुमसे होगा ही नहीं. नो, our job is not to predict, but rather our job is to let them think. The thinking process वहां पे स्टिमुलेट होनी चाहिए. हाँ मैंने क्या करना चाहिए. टेस्ट में तो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि हाँ आर्ट्स में इंटरेस्ट है, पर क्या सच में है? और अगर आर्ट्स में है तो आर्ट्स में भी क्या है? आर्ट्स में साइकोलॉजी है, आर्ट्स में लिटरेचर है, आर्ट्स में ज्योग्राफी भी है, आर्ट्स में ट्रैवल एंड टूरिज्म भी है. सो व्हाट एग्जैक्टली एम आई सपोज्ड टू डू, एंड हाउ वेल I should do it. That should be the role and goal of counseling sessions further. But ये भी आगे का काउंसलिंग कब होगा? जब when as a clinician, as a counselor, you will be able to administer the test appropriately. For example, now let's see. Make some candy, tell stories to children, paint with watercolors. Out of 100, this is one of the statement. And for this statement, these are the 3 options. And you are supposed to give ranks to it. The respondent, or as a subject, it's instructed to mark one item as most like. For example, one may give first preference कि हाँ ये जो है इसको I will give A, then this B, or then this C, or 1, 2, 3. Most attractive, least, and to leave one blank. So approximately जे combinations है किंवा variations, possibilities, तो ABC हो सकता है, ACB हो सकता है, किसी का BA, CB, CA, आणि मग C चा सुद्धा CA, BC, BA, like that. Overall, these 5 things we have to keep in mind when we are administering such kind of test or survey test. Present occupation with a description of characteristics of the work. हाँ मुझे टीचर बनना है, टीचर बनने में इंटरेस्ट है. ओके गुड.
Being a teacher means exactly what? What will be job, actual job profile? हमें हमें क्या लगता है कि हाँ, टीचर बनना मतलब क्या? एक बुक लेना, वहां पे क्लास में जाना, वो बताना, सिखाना, पढ़ाना और हो गया. It is not like that. To administer one lecture or 1 hour, you have to prepare for at least 2 hours. वो 4 बुक्स पढ़ो, उसके नोट्स निकालो, उनकी समरी करो, वो प्रेजेंटेशन कैसे करना है उसकी तैयारी करो. Be ready with some expected question answers and everything. हे जेव्हा 2 तासाचे आधी तिथे रंगीत तालीम होते, तेव्हा आपण अर्धा तासाचे किंवा पाऊण तासाचे लेक्चर तिथे घेऊ शकतो. ये हो गया being a teacher 50% वाला. Another 50% in the sense एडमिनिस्ट्रेटिव भी होता है. फॉर एग्जाम्पल, अपने डिपार्टमेंट की अगर हम बात कर ले, नाउ एवरी ईयर वी हैव एडमिशन प्रोसेस. तो वो कौन करेगा वहां पे? जो एचओडी एंड अदर कंसर्न स्टाफ है, दे आर ओनली मीन्स गोइंग टू डू अरेंजिंग ऑल द फॉर्म्स इन दैट पर्टिकुलर मेरिट ऑर्डर और सीक्वेंस. इवन कैटेगरी वाइज फिर वो एक एक को सेग्रीगेट करना कि हाँ ये इधर होगा, ये इधर होगा. इसने अगर एडमिशन कैंसिल की तो फिर दूसरे को कुछ ये बताना, इन्फॉर्म करना, टू कम्युनिकेट, टू फॉलो एंड ऑल दिस थिंग्स. एक पार्ट. सेकेंड थिंग इज अबाउट frequently like school, in colleges also we have some kind of inspection or investigation, like ISO committee होती है, LIC committee होती है, फलाना फलाना कहीं ना कहीं तरीके असेसमेंट इवैल्यूएशन वगैरह होता है. 2 years back, some of you you might have actually observed the NAC visit in our college. तो तब वो सब कुछ डिपार्टमेंटल का पूरा ऑडिट वहां पे रेडी रखना, पिछले 5, 6, 7, 8 साल का, ये काम कौन करेगा? ये भी टीचर का ही. सो दैट मीन्स प्रेजेंटिंग ऑक्यूपेशन विथ अ डिस्क्रिप्शन of that particular character. This is what it is of one single role or occupation of a teacher. So same thing with scientist, accountant, or why, or with any other profession. Educational and work history, some kind of experience also it is required. Now those who have done BA and all of a sudden अगर किसी ने कहा कि सर अभी मुझे MSc करना है, is your educational history supported to this thing? At least in India now, BA करने के बाद immediately MSc it is not possible. रिवर्स में हो सकता है, MSc किया है लेकिन बाद में MA को एडमिशन, बिकॉज वो एजुकेशनल सेटअप, वो सब्जेक्ट्स, अभी तक साइकोलॉजी पढ़ा, अभी तक हिस्ट्री पढ़ा है आपने, और इमीडिएटली बाद में अगर आप ऑर्गेनिक ऐसे केमिस्ट्री या फिर काही आणखी टेक्निकल टर्म्स मध्ये जर तुम्ही जात असाल, you must require that kind of educational history. Entry into current occupation, detailed information about this, individual's perception of the advantages and disadvantages of the occupation. Especially this fourth point, it is important when we are administering such kind of aptitude test or vocational guidance test on school going children. 8, 9, 10th में वो एकदम हर एक चीज हमें फैसिनेटिंग लगती है. हर 2 दिन में हमारे करियर के प्लान्स चेंज होते हैं. हमें पायलट बनना है, 2 दिन के बाद नहीं अभी हमें डॉक्टर बनना है, फिर 2 दिन के बाद नहीं हमारे वो टीचर है ना, उनके जैसे हमें बनना है, फिर कोई कुछ. Why? Some may focus, some may see only the glory or only the status, success of that thing. बट उसके लिए कितना हार्डवर्क है, क्या प्रोसेस है, एंट्रेंस है कि नहीं, एंट्रेंस अगर है तो उसका कट ऑफ कितना है, क्या प्लस क्या माइनस, everything we should have in detail to communicate, to discuss with that student, or even sometimes we may also have to deal to share all this information with parents.
ऑक्यूपेशन या फिर करियर की जब आती है तब पेरेंटल प्रेशर भी समटाइम्स होता है, तो उनसे ये सारी चीजें कम्युनिकेट करना, डिस्कस करना, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. एंड व्हाट एडवाइस द वर्कर वुड ऑफर टू समवन कंसिडरिंग एंटरिंग इन द सेम ऑक्यूपेशन. जिस चीज में या फिर जिस पर्टिकुलर फील्ड में हमें जाना है, क्या सच में हमने उस फील्ड को एक्सप्लोर किया है? Those who are actually working in the same field since last 4, 5, 6, 10 years, have you ever discussed with them? कभी हम उनसे मिले हैं क्या? The same thing, it is like review of literature in terms of research or project which you are doing right now. हमारा hypothesis कब फ्रेम होता है? जब हम कुछ रिव्यू लेते हैं तब. सो सेम थिंग, जिस चीज में हमें करियर करना है, कभी हमने उसमें जाके देखा है? जो है उस फील्ड में, उनसे कभी हमने डिस्कस किया है या नहीं? ये सारी चीजें, एवरीथिंग गेट्स असेस्ड ट्रैक इन दिस टेस्ट, Coder Occupational Interest Inventory, and this is a sample scoring chart, report score of KOI. As you can see, occupational interest, C. Occupational skills, female norms. College major skills, female. Occupational skills for male. College major skills for male again. And then accordingly, this thing. So title and scoring and some other things. Accountant, bank clerk, bookkeeper, physical therapist, psychologist. Psychologist इधर है ये, clinical psychologist. For male again, bookkeeper. अभी देखो कुछ ऐसे भी प्रोफेशन है which are quite common. Bookkeeper यहाँ पे है, इधर भी है, but norms are changing. Here it is 0.43, here it is 0.35, 35. Is it visible to you clearly? Yes, sir. Yes, sir. Okay. आणि झूम पण होत असेल ना तुम्हाला स्क्रीनवरती ते? Yes, sir. Okay, great. So now tell me, so what you can make out of this? अभी तक हमने एक बेसिक आउटलाइन डिस्कस की और ये एक्चुअल इसका स्कोरिंग चार्ट है या फिर रिस्पॉन्स शीट भी हम कह सकते हैं उसे. So what you can make out of this? KOI, Coder Occupational Interest, with reference to psychologist, counselor, diagnostician. Yes, anyone? Have you understood? Have you followed? सर एक क्वेश्चन था. Yes, please ask. सर जो ये आउट ऑफ 100 है ना सर, तो सर अगर सपोज किसी को आ गए हैं 60, तो वो इनमें से कोई भी ऑक्यूपेशन मतलब चूज कर सकता है? जो फर्स्ट वाला है ऑक्यूपेशनल स्किल्स फीमेल नॉर्म्स वाला, हाँ, तो वैसा ही है ना सर? नहीं, आई एम नॉट गेटिंग यू. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सपोज टेस्ट के बाद पर्सन का जो स्कोर है वो आया है 60 आउट ऑफ 100, तो सर इसमें तो मैक्सिमम जो स्कोर है वो है 57 साइकोलॉजिस्ट का, तो वो पर्सन जो है वो इसमें से कोई भी ऑक्यूपेशन चूज कर सकता है? कोई भी चूज कर सकता है, ये एक बात हो गई, but at the same time, this is what it is the role. See this. Counselor's task or job is
to facilitate decision making process. And so to start with any report, generally it says that based on your responses given on this particular test, it reflects that, and then आगे का पार्ट होगा. तो अभी जो आपने टेस्ट सॉल्व की है उससे तो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है that yes, you may, you will be good in doing this in this particular area. But then this kind of discussion also it is important. That do you really aware that being a psychologist means exactly what? Psychologist होने के लिए क्या क्या करना होगा, in the sense कोर्सेस कौन से है, कहाँ से आप अच्छे से ये कोर्स एक कंप्लीट कर सकते हो, उसका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एक होना मतलब एग्जैक्टली क्या. एट द सेम टाइम इट इज इंटरेस्ट सर्वे. सो साइकोलॉजिस्ट का एरिया अगर फर्स्ट में आ रहा है तो फिर सेकंड कौन सा है, साइकोलॉजिस्ट होने के एडवांटेजेस कौन से है, नॉट द डिसएडवांटेजेस बट उसके कुछ लिमिटेशंस या फिर लूप होल्स या फिर कुछ सम अदर शेड. हाउ फार वी आर means making them aware about this thing. This is also equally important. And another important aspect is generally aptitude testing के साथ साथ intelligence का testing भी होता है. Then we can have more concrete data that being fascinated, being interested in one area, it is different. And having intelligence to work more effectively in the same area, it is also different. इंटरेस्ट है, लेकिन क्या सच में वो इंसान इस फील्ड में जॉब कर सकता है क्या आगे? 25-30 साल का अपना करियर इस एक फील्ड में वो सस्टेन कंटिन्यू कर सकता है क्या? ये असेस करने के लिए इंटेलिजेंस की तरह कोई एक दो टेस्ट, ऑक्यूपेशनल या फिर एप्टीट्यूड वाली टेस्ट, एंड प्लस इनका एप्रोप्रिएट स्कोरिंग, असेसमेंट एंड काउंसलिंग, इंटरप्रिटेशन, ऑल दिस थिंग्स इट इज इंपॉर्टेंट. Okay, sir. Okay, understood? Yes, sir. Thank you so much, sir. Okay, yes. Welcome, Krishna. Yes, anyone else? Any doubt or anything to share on this note? KOI. For MCQ purpose also, even if it is small, but still इससे काफी सारे MCQs बन सकते हैं. So be ready. Who is the author? How many statement? 4 choice item है या नहीं है, या फिर कैसे, interest, examples, anything they can frame in MCQ. समजते हैं सगळ्यांना नक्की? फॉलो होत आहे? Srushti. Okay, yes, right. Now, next important point is 5 years back, there was National Conference of Psychology in Navsari, near Surat. It was 2-day conference, and on second day, Dr. Ravi Gunte sir, at that time he was head of IAAP, that is Indian Association of Applied Psychology. Every year, this organization or this group, they conduct at least one national seminar. So in that particular seminar, in that particular conference, so Gunte sir, they have presented, they have shared about their own institute, that उनके इंस्टीट्यूट में वोकेशनल का एक उन्होंने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन मतलब ये अपना मोबाइल वाला नहीं,
अभी जैसे ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, नीओपीआई भी अभी ऑनलाइन है, एमएमपीआई भी ऑनलाइन है, एमसीएमआई भी ऑनलाइन है, काफी टेस्ट अभी ऑनलाइन मोड में है. सो इन द सेम वे दे हैव आल्सो डेवलप्ड एप्टीट्यूड टेस्ट सॉफ्टवेयर. एंड बेस्ड ऑन दैट, सो वहां पे जब हमारा एप्टीट्यूड का टेस्टिंग होता है, उसमें उन्होंने काफी एरियाज कवर किए हैं उस टेस्ट में. एंड नॉट ओनली दैट, but even at the end of the test and even your assessment and counseling. So suppose अगर आपने वो टेस्ट आप देते हो, आप सॉल्व करते हो, और इससे एग्जाम्पल आई एम गिविंग, उससे अगर ये रिफ्लेक्ट हो रहा है दैट आर्ट्स में आपका करियर अच्छा हो सकता है, और इट रिफ्लेक्ट्स दैट यू आर मोर इंक्लाइंड इन आर्ट्स. तो आर्ट्स मतलब क्या है? आर्ट्स में रिक्वायर्ड स्किल्स, एबिलिटीज एंड पोटेंशियल्स कौन से हैं? आप में वो कितने परसेंटेज में है? सिर्फ इतना ही नहीं, आर्ट्स के मेन कॉलेजेस कौन से हैं, उस कॉलेजेस का कॉन्टैक्ट नंबर, वहाँ के फैकल्टीज का भी कॉन्टैक्ट नंबर, वो डिटेल इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर एप्टीट्यूड टेस्ट के सॉफ्टवेयर में ही उन्होंने दी. This kind of, detailed presentation they had given at that time. How far do we really aware about all these things के हमारे साइकोलॉजी के फील्ड में आजू बाजू में क्या हो रहा है? उन्होंने ये कब प्रेजेंट किया था? 2016 में, वहां के पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में. तो अभी अगर हमारा एमए पार्ट 2 है और 6, 7, 8, 10 महीने के बाद हमारे नाम के आगे भी अगर साइकोलॉजिस्ट का एक डिग्री, एक ऑक्यूपेशन अगर लगने वाला है, डू वी रियली अवेयर अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन इन आवर सराउंडिंग? अब्रॉड की बात तो बाद में, उसमें तो बहुत कुछ है, बट एटलीस्ट हमारे इंडिया में क्या क्या हो रहा है साइकोलॉजी में? How far we are aware, how far we are alert about all these things. It is also important. इतना रेफरेंस मैंने अभी दिया है. I expect from you that you may also search on this further. क्या है, कैसा है, फिर कहाँ पे है, हम वहां पे जाके कुछ सीख सकते हैं क्या, वो ट्रेनिंग देने वाले हैं या नहीं, हम ट्रेनिंग ले सकते हैं या नहीं, आगे क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट टू सर्च, टू एक्सप्लोर. Still we have one more year to in a way some kind of having to do experiment के हाँ हम यहाँ पे जाएंगे, हम वहाँ पे जाएंगे, हम वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट देख के आएंगे, सीख के आएंगे, एटलीस्ट बात तो करेंगे वहाँ के जो कोई भी एक कंसर्न हेड है उनसे, so that after completing your masters you will be more focused, more specific in your career.